anti-state, it is anti-class, and therefore it is anti-nationalist. And Marxism ideology को हम कहते हैं, it wants to create a global solidarity of the proletariats. It wants to establish a global commune system instead of the nationalist divisions of the planet. So, अब प्रॉब्लम ये था, अब यहाँ पे आप बेसिकली इसी पॉइंट को उठाएंगे, ये जो मैंने आपको ब्रीफ सी समरी बताई, हाउ कम्युनिज्म goes against the nationalist ideology. And after highlighting that criticism of Marxism or communism against nationalism, after highlighting that theoretical antithesis between the two, the rivalry, that kind of, they want to establish a global proletariat revolution. The Marxists want to establish a global proletariat revolution, creating a global community, a global society, instead of divisions into regional ones. Yes, with no classes at all. True, no divisions. True, Amir. So, Mazdoor Union नहीं लिखेंगे, they want to establish a global system. अब मसला ये है कि nationalism है, that's the loyalty to state, while in Marxism the loyalty is to the global proletariat movement, not just to a state. So it's more like a global centric approach. Marxism is global, and nationalism is kind of limited to state only. अब issue ये था, 1917 में Russia was the first country to witness communist revolution. Vladimir Lenin brought the first communist revolution in 1917. And since then, since that revolution of 1917, the Russians, as part of the Leninist ideology, started spreading the communist ideas and invoking the communist revolutions around the world. Such as both. National is limited to state, yes. State का मतलब ही nation state होता है, तो nation and state is the same thing. मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट करूंगी. The Russian Communist Revolution of 1917 and the resultant Leninist ideology was meant to spread communism worldwide. And they propagated the idea of communism, and not just propagated the idea of communism, the Russians also started invoking or kind of inciting the revolutions throughout the world. But अगर हम गौर से देखें तो Russia started that campaign from its western neighbors. Russia के west में जो neighbors हैं, जिसको हम East Europe कहते हैं, that East Europe was the first target of Russia to spread communism. So what we see is Russian Communist Revolution started spreading to Austria, to Czechoslovakia, to Poland, and to neighboring states and all that. As a result of that spread of communism in East Europe, Italy felt threatened. In fact, यहाँ सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी. जब कम्युनिज्म और सोशलिज्म स्प्रेड होना शुरू हुआ, रशिया से बाहर निकला, जब इटली की तरफ मूव किया, तो आप हैरान होंगे सुन के that it was Mussolini who initially joined the Socialist Party of Italy. He used the Social Party platform to rise in his political power. But soon he realized that his nationalist ideologies have no stand, have no chance in the socialist and Marxist narrative. Initially, he joined the Socialist Party, but later he realized that his nationalist ideas are not compatible with the Marxist and the socialist and the communist ideology. And therefore, he left socialism. He left that Socialist Party and
he started considering socialism a threat to the nationalism in Italy. इस पॉइंट को मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूं. Mussolini, when he left the Socialist Party on the pretext that his goals were different from the socialist goals, but after leaving it, he soon realized that communism is one of the most important threats to the nationalism of Italy. Shabazz, that's true. अच्छा, यहाँ पे मार्क्सिस्ट का ख्याल थोड़ा डिफरेंट है. वो कहते हैं कि नहीं, ये फाशिस्ट की आइडियोलॉजी यूरोपियंस ने खुद क्रिएट की है अगेंस्ट द कम्युनिस्ट्स, बट हम ये ऐसे कहेंगे नहीं. सो फाशिज्म एज एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी was encouraged to protect Italy from the threat of communism. And it was Mussolini who believed so and who led that movement of fascism in Italy. Is it clear, Ji? So if communism is growing, if communism is spreading in East Europe, then Italians have to be strong enough, they have to develop the एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को, फाशिज्म को डेवलप करना पड़ेगा सो दैट दे कुड कन्फ्रंट द राइजिंग थ्रेट फ्रॉम कम्युनिज्म. Mussolini had to unite Italy, and he had to unite Italy because he knew that socialism is posing a threat to the nationalism in Italy. It will, if it comes to power in Italy, then Italy will become a client state to Russia. वो client बन जाएगा, और Italy का जो proud nationalism है, that will no longer be there. So to protect the nationalism of Italy, to protect Italy from being consumed by communism, Mussolini developed the fascist ideology. Shabazz, absolutely, you summed it very well. It's a kind of reaction to the rise of communism in Russia. That's the point. Is it clear? Okay. Let's go to the third one. Third major factor. And that is, अगर आपको याद हो, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, that is the corruption, corrupt government. अच्छा, इस तरह से है. अब ये पॉइंट जरा ध्यान में रखिएगा प्लीज. इटली के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से मतलब है वहाँ मोनार्क है, वहाँ किंगशिप थी और क्राउन था, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम है जैसा ब्रिटेन में आजकल होता है. देयर वाज क्राउन एंड देयर वाज प्राइम मिनिस्टर एंड देयर वाज पार्लियामेंट्री सिस्टम. अच्छा, उस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हेड कर रहा था अल्टीमेटली क्राउन. लेकिन प्रॉब्लम ये था दैट इटली फेस्ड सिवियर इकोनॉमिक चैलेंजेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. वर्ल्ड वॉर वन के बाद यूरोप वाज डिस्ट्रॉयड ऑब्वियसली. हम वैसे तो नहीं कहते एक आईआर के अंदर दैट इन वॉर्स नो वन विंस, एवरीबडी लूजेस. सो इन दैट वॉर, इन द वर्ल्ड वॉर वन, although allies won, Italy was on the side of the victorious states, but their economies collapsed. When the economies collapsed in Europe in general and Italy in particular, and the government that they inherited, the parliamentary government, a constitutional monarchy, that government was incompetent and corrupt too. So there were twin challenges. One was the challenge of economic catastrophe caused by the World War I, and to add fire to that fuel was, to add to that problem was the fact that the government was corrupt and inefficient. And that corruption, that inability to govern effectively
created a hatred in the hearts of the people. So people were not satisfied with the monarchy or the constitutional government, the parliamentary system. They were critical of the government and their policies because it has brought them nothing but famines हुए इटली के अंदर. It has brought them nothing but unemployment, poverty and all that. So the economic crisis after World War I and the corrupt parliamentary government, these both created an environment which was ideal for the fascist revolution. And that's what fascists kind of exploited. That's what they used as a pretext to gain control in the state. अच्छा, अभी हम ये causes की जब हम बात कर रहे हैं तो इस तीसरे cause से ही हम लिंक करेंगे कि fascism की आइडिया तो हमें समझ में आ गया क्यों डेवलप हुआ, बट ये पावर में कैसे है, हाउ मुसोलिनी केम टू पावर. अब यहाँ पे फिर टाइमलाइन आती है 1924 में, ये मज़ला की बुक में लिखी हुई है. इन 1924 द बेनितो मुसोलिनी ordered his fascist militias. Fascism का मतलब होता है बैंड्स, ग्रुप्स. तो उसकी पार्टी के जो बैंड्स और ग्रुप्स थे उनको हम fascist militias कहते हैं. अच्छा, वो militias they were getting powerful mainly because of two reasons. Those fascist militias, the fascist groups or bands that were loyal to Mussolini, they started growing in power mainly because of two reasons. One, because those fascist groups were growing in power because they challenged the communists in that region. जो उस रीजन के अंदर, इटली के अंदर जब कम्युनिज्म ग्रो कर रहा था, when communist militias were growing over there, they were holding protests and all that, political gatherings. So Mussolini, as a nationalist who considered communism as a threat, mobilized his bands to confront them. So एक तरफ प्रोटेस्ट कर रहे होते थे, politically charged होते थे communists, but to counter them, the fascists would move in and they would threaten the communists. So in other words, इसके लिए मॉडर्न दौर में हम एक लफ्ज़ यूज करते हैं, it was more like a vigilantism. अगर आपने सुना हो लफ्ज़ विजिलेंटिज्म का, क्या होता है विजिलेंटिज्म? इसको काइंड ऑफ मॉरल पुलिसिंग, अलर्टनेस, बैठ ये सर ठीक कह रही हैं. इट्स लाइक मॉरल पुलिसमैन. yes Ali. Now the question is का विजिलेंटीज एग्जैक्टली इंडिया के अंदर कहते हैं, हमारे यहाँ भी काफ़ी सारे हैं, हर किस्म के विजिलेंटीज मौजूद हैं. सो सबसे बड़ा विजिलेंटी तुम्हारे घर में फूफूज होती है ना समहाउ. तो द क्वेश्चन इज जो नज़र रखते हैं, द काइंड ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन पीपल. ठीक है, खाला भी है डिपेंडिंग अपॉन. सो दोज हु एक्चुअली मेडल इनटू those who meddle into others' affairs, जो कि देखते हैं एक तरह से मॉरल पुलिसिंग कर रहे होते हैं. They actually make sure that the people act the way they want them to act. So the point is, the fascists were making sure that nobody in Italy worked against the state interest. And wherever they found out that the socialists are gathering, or they are protesting, or they are campaigning, the fascists would go over there and they would use violence against those socialists. And state was happy, because state का काम वो कर रही थी. So those fascists became powerful militias who actually acted as a state within a state. They acted as vigilante, they acted as a state within a state. Now एक तो बड़ी वजह थी, तो सोशलिस्ट का आना ये एक एक्सक्यूज का through which fascists were growing in power. Secondly, the state of Italy was absolutely fine with them. Yes, Gulu birds can. But the state was also fine with that. State allowed them to operate initially.
hoping that there could be an antithesis to communism. And state doesn't need to confront the communists, fascists will do the job for the state. But later on, in 1924, Mussolini ordered the fascist bands around Italy to march towards Rome. He ordered them to march towards Rome. उसको हम कहते हैं March to Rome. 1924. Second point, Umar, was the state of Italy allowing those fascists to confront the communists. And that allowing them the space, allowing the vigilante to grow in power was the second reason why they grow in power. State, अगर state उनको action लेती शायद ना बढ़ रहे होते, but state allowed them to grow in power. So 1924 में Mussolini ordered them to march towards Rome. And those fascists besieged Rome. By 1926, the Crown appointed Mussolini as the head of the government. He was appointed as the prime minister or as the head of the government in 1926. So Mussolini did not come to power by elections. He did not come to power by opposition. He came to power through dharna, आप कह सकते हैं. Not exactly dharna लिखिएगा, but he came to power through coercion, through the threat of coercion, through the siege of Rome by force. But it was Crown who invited him. Yes, he didn't come to power conventionally or legally that way. But as soon by the Crown appointed him as the PM. King कह लें या Crown कह लें. Now 1926 में he joined the government, he headed the government in 1926. But soon after appointment, he started taking drastic measures towards authoritarian rule. And the steps that he took were what we call the fascist policies. The steps that he took, the drastic steps that he took after coming to power in 1926 are what we call the fascism or the fascist principles. और मैंने अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो मुसोलिनी ने खुद ही कहा था that fascism is not talk, it is action. Exact word शायद कुछ और हो, but उसने कहा था fascism is not talk, it is action. यानी fascism बातों का नाम नहीं है, it is action. Whatever we do is called fascism. That's what fascism is. So what steps he took after 1926 and he continued to rule till 1944 in Italy. जब 44 में उसके खिलाफ coup हुआ, internally coup हुआ. But from 1926 to 1944, Mussolini, when he governed, his governing principles are termed as the modern principles of fascism. Let's see what are those principles through which he governed and he propagated those principles. Yes. Principles. So there are different principles. For example, पहला principle तो है nationalism. In fascism, okay, मैं speed थोड़ी कम करता हूँ जी. Nationalism was the core principle of fascism. It was and it remains the core principle of fascism. When I say it was and it is core principle of fascism, why? Because fascism grew as a nationalist ideology. For fascists, state is the end and people are, state is the end and people are only the means.
the people can benefit only if they are loyal to state. So even sacrifice for the sake of state. They must even sacrifice their life for the sake of state. Is it clear? हम इसको कह सकते हैं state is the end, people are the means. Is it clear? Authoritarianism. जी, true. Authoritarianism means that all the authority is concentrated in one man's hands. All the powers, all the authority lies in the hand of some people at the helm of affairs. Yes, Shabazz, true. Authority and power is concentrated in top brass, in the ruling elite. Again, that could be a person and that could be a body of persons. In this case, in Mussolini's case, in Italy's case, all the powers were concentrated in the hands of dues. ड्यूस का तर्जुमा देख लीजिएगा, मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया उसका लफ्ज़ी, लिटिल मीनिंग है इसका. डज इट मीन द रूलर? अमीर रमजान ने लिखा एल ड्यूस. अमीर रमजान कॉल एल का तो मुझे पता है, मैन ऑफ स्टील में कौन सी मूवी है. सो ड्यूस का लफ्ज़ होता है. ड्यूस का लिटिल मीनिंग मेरे ख्याल में द रूलर के हैं. ड्यूस मीन्स लीडर के. यस. Now, in authoritarianism, all the powers were in the hands of dues, the leader. And that means Mussolini, Benito Mussolini. And that's called authoritarianism. इसका मतलब यह है, यहाँ पे devolution का concept नहीं है, यहाँ पे delegation of power का concept नहीं है. It is not based on individual rights and freedoms. Instead, it means the collective interest of the community. So fascism is a collectivist ideology, not individualistic ideology. So fascism is a collectivist ideology, not an individualistic ideology. Is it clear? So no democracy, no, how collectivist? अच्छा, मुझे बताइएगा, इन अभी आ रहा हूँ उसके बाद. Is democracy based on individual choices or it is based on collective choice? No, it is individualistic, in which every individual is free to make its own choices, and the aggregate of individual is not collectivism.
where every individual, every person is free to make choices. And then aggregate of people, उसी पॉइंट को हमने रिपीट करूं. So in fascism, the individuals are not free to make choices. Choices has to be made by the dues. Choices have to be made by the dues for everybody together and not about some individuals. So, secondly, in anti-democracy principle, he considered elections as useless. Elections were banned. और जब इलेक्शन बैन हो जाएंगे, इंडिविजुअल के राइट्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली बात है, देयर विल बी नो डेमोक्रेसी. द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी was unworkable, it is unworkable in the fascist states. जहां अथॉरिटेरियनिज्म आ जाए, जहां कलेक्टिविज्म आ जाए और जहां पे इलेक्शंस ना हो, that simply means that there was no democracy in that state. No liberty, no rights. Fascism is meant to limit the rights and liberties of the people. The liberties and the rights of the people are limited and they are granted as per the wish of dues. I repeat this point. The liberties and freedoms are given to the people not because they have the right to, but as per the wishes of the dues. Dues को लगा के right देने चाहिए तो देगा. No individual rights, no collective rights, nothing at all. No rights. ये नहीं होगा no rights होंगे, मतलब limited rights की बात करेंगे, limited liberties. Only those liberties will be granted that dues thinks are worth it. So you do not have a natural right to liberty. You don't have the natural rights to property. You have no natural rights at all. The rights are only to be given to them by the dues. कोई काब्स नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा. शहबाज मार ले पॉइंट, कोई बात नहीं. So the point is लिमिटेड हो जाएगी फ्रीडम उसकी, इंडिविजुअल्स की लिमिटेड हो जाएगी उनकी राइट्स को, और राइट्स इंडिविजुअल खुद डिटरमिन नहीं करेंगे, उनके राइट्स को डिटरमिन करेगा ड्यूस डिटरमिन करेगा. दैट विल बी स्टेट कंट्रोल्ड लिबर्टीज होंगी, स्टेट गिवन फ्रीडम्स होंगी. सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट उसका प्रिंसिपल बड़ा इंटरेस्टिंग है. लिमिटेड सॉरी एक पॉइंट. वन पार्टी सिस्टम in fascism only one fascist party is allowed to work. No other parties are allowed. Only one party, one fascist party is allowed to operate. The other parties are banned. The other parties are banned and they are not allowed to work or operate. Is it clear, Ji? Only one party is allowed and no other parties are allowed to work and to operate. यूएई में तो शहबाज एक पार्टी तो नहीं है, यहाँ तो पार्टी है ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी यूएई में. चाइना में यस, बट चाइना में भी एक थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लीजिएगा प्लीज. चाइना के अंदर बाकी पार्टीज बैन नहीं है. चाइना में बाकी पार्टीज बैन नहीं है. चाइना में बाकी पार्टीज पावर में नहीं है आई,
They have never been to war. There are independents, there are other groups, but those parties are discouraged, and those parties are not allowed to flourish actually. एग्जाम्पल चाइना की ले सकते हैं, वन पार्टी सिस्टम है. नॉर्थ कोरिया, यस ऑब्वियसली वो तो क्लासिकल एग्जाम्पल है. रिमशा अगेन, रशिया में बाकी पार्टीज मौजूद हैं, वो कभी पावर में नहीं आती बट मौजूद है वहां पे. या स्टेट क्रिएटेड पोजीशन, दैट्स ट्रू मीरमजा, बट समहाउ कैन वी से फाशिस्ट स्टेट इज द रियलाइजेशन ऑफ द मैक्यूलन स्टेट? नो साद, हम ऐसे नहीं कहेंगे. रीजन मैं बाद में आऊंगा, बट इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं. तायरा अगेन देखिए यहां पे आपने जो बात की है, वन पार्टी सिस्टम इज अगेंस्ट द कलेक्टिविस्ट आइडियोलॉजी. नो, इट इज नॉट. इट इज वेरी मच इन लाइन. देखिए, इफ कलेक्टिविस्ट आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि आप सारों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं. यू वांट टू क्रिएट अ यूनिटी, वन आइडिया फॉर एवरीबॉडी, एंड दैट वन आइडिया फॉर एवरीबॉडी कैन ओनली बी पॉसिबल इफ देयर इज वन पार्टी. तारे इसी को हम एक दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं, दूसरी फ्रेजोलॉजी में कहते हैं, इट्स यूनिटी थ्रू यूनिफॉर्मिटी, एंड दैट्स हाउ वी कैन बी कलेक्टिविस्ट इन आवर अप्रोच. कलेक्टिविस्ट को थोड़ा डिफरेंट कीजिएगा तारा एक टर्म से, और वो है जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी. कलेक्टिविज्म इज नॉट लाइक डाइवर्सिटी. कलेक्टिविज्म इज मोर लाइक यूनिफॉर्मिटी, and that's why it requires one party over there. So Mussolini banned all other parties, and in fact, if somebody would have ideology, if somebody would have political ideas that are different from fascism, then they are banned. You are not allowed to have any political affiliation, any political ideology other than that of the fascists. If you do, you are doomed. Then you are punished, you are gone simply. So somehow one party leadership, इसको हम कहते हैं इलीगल थी. दूसरी पार्टी, या ना सिर्फ पार्टी रखना बल्कि पॉलिटिकल आइडियाज दूसरे रखना, that was also banned in the fascist systems. Yes, you are disposal of dues. लास्ट पॉइंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, द स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्टी. क्योंकि एक ही पार्टी है और उसी पार्टी से ही गवर्नेंस होती है, सो एवरीबॉडी वुड लाइक टू गो एंड बिकम पार्ट ऑफ द पार्टी मेंबर. बट फाशिस्ट ज़्यादा किधर लग रहा है? दैट्स ट्रू. अच्छा, now in fascism the party membership was very restricted and competitive. I repeat, the party membership was very much restricted and competitive. अच्छा, competitive से मतलब CSS वालों से पूछ रहा हूं, कंपैरेटिव से मतलब आपका एग्जाम कंपैरेटिव एग्जामिनेशन होता है. इसका मतलब क्या होता है? स्टेपिंग ऑन अदर्स. दैट्स ट्रू. 2% पास होंगे, साथ ठीक कह रहे हैं. यस, पीपल स्ट्रगल, ओनली बेस्ट मूव अहेड. दैट्स ट्रू. compete or die. Now it means not everybody is eligible to become the member of the party. सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग. There were exams to become a party member. There were interviews conducted, and the candidates were given practical tasks, and those tasks were meant to measure their loyalty to the party. Party matlab dues, loyalty to the state, and their competence. उनकी कंपिटेंस चेक की जाती थी, उनकी लॉयल्टी चेक की जाती थी थ्रू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, थियोरेटिकल एग्जामिनेशंस, इंटरव्यूज, एंड ऑब्वियसली द लॉयल्टी टू द पार्टी एंड द ड्यूज एंड ऑल दैट, एंड ऑब्वियसली उसकी जो इंटेलेक्ट है वो सारा. सो दिस मेंबरशिप वाज एक्सट्रीमली
extremely, yes, it's like plateaus, that's true. So it was extremely tough process and not everybody would get through it. बट उसमें बुनियादी शर्त ये होती थी मेंबरशिप के लिए दैट यू मस्ट बी लॉयल टू ड्यूज सबऑर्डिनेशन टू द ड्यूज एंड ऑब्वियसली योर पेट्रियाटिज्म एंड नेशनलिज्म टू द स्टेट दैट वाज आल्सो अ रिक्वायरमेंट. इटली सीएसएस, यस मैं सुनी सीएसएस. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जी फाशिज्म के. दीज आर कुछ सम प्रिंसिपल्स ऑफ द फाशिज्म. डिक्टेटोरियल काइंड ऑफ गवर्नेंस है, इलेक्शंस है नहीं, पार्लियामेंट है नहीं, पार्लियामेंट वाज डिसॉल्व्ड, मोनार्की वाज केप्ट इंटैक्ट बट सिंबॉलिकली. It's more like anti-democratic, authoritarian, nationalist. अच्छा, यहाँ पे एक जुमला लाजिम मैं इसको कंक्लूजन में ऐड करूंगा. This fascism and the kind of political and social training that it establishes, the kind of political and social order that it wants to establish, it is more like a xenophobia than a nationalist ideology. Xenophobia क्या होता है? X xenophobia. अगर किसी को आइडिया हो, it's like yes, you love your state to the extent that you hate others. Literally मतलब होता है xenophobia का स्पेलिंग भी यहाँ पे लिखते कोई बंदा. Literally मतलब होता है fear of aliens, strangers. Yes, sir. Fear of aliens या fear of thank you उमेरा. लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट मीनिंग है यू लव योर स्टेट, इट्स अ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी एंड दैट क्राइटेरिया ऑफ अ पेट्रियाटिज्म इज यू हेट अदर्स. यू लव योर कंट्री टू द एक्सटेंट दैट यू हेट अदर्स. पोजेसिव हो जाते हैं, दे आर हेट्रेड टुवर्ड्स अदर स्टेट्स. जैसे आपको एक बेसिक बात पता है, एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी के होने के लिए ये जरूरी है कि आप इंडिया से नफरत करते हो, और इंडिया में एक पेट्रियाटिक इंडियन होने के लिए जरूरी है कि आप पाकिस्तान से नफरत करते हो. ऐसा होता है. तो इस तरह के नेशनलिज्म को हम बेसिकली xenophobic कहते हैं. So this is more like a xenophobic ideology. हुमैरा का है जी that is its relevance in modern world. No हुमैरा, मॉडर्न दौर में रेलेवेंस ये भी है, बट हम इसको और सेंस में भी जरा लिखेंगे. दैट्स ट्रू साद. और ओबामा ने जो आपने बात की, दैट्स इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स दे आर फार मोर ग्रेटर देन दे आर इन पाकिस्तान. आई हैव नो डाउट ऑन दैट साद, एब्सोल्युटली. दैट्स माय फर्स्ट हैंड पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दैट्स माय ऑब्जर्वेशन, दैट्स माय स्टडी, एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाट इंटरनेशनल commentators like Obama said over there. True, no doubt on this one. Xenophobia का मतलब है जी, xenophobia का मतलब ये है that you love your state to the extent that you hate others. अपने मुल्क से इतना प्यार करना कि दूसरों से नफरत होना शुरू हो जाए, that kind of thing is called xenophobia. So यहाँ पे ये नेशनलिज्म कम है और बाकियों के लिए हेट्रेड ज्यादा है. मैंने अमीर साहब वैसे नहीं पढ़ी बुक उसकी, तो मेरा कमेंट नहीं है इस पे ऊपर. मैंने लाइन यूज की xenophobia वाली, आई डोंट नो मैंने क्या यूज की. मैंने कहा कि उसकी जो थ्योरी है इट्स मोर लाइक अ xenophobia थ्योरी, दैट्स व्हाट इट इज. अच्छा, एक छोटा सा मेरा आपके पॉइंट को जरा, पहले वाले पॉइंट को जरा आगे थोड़ा सा कर लूं. उमर ने पूछा, नो दैट्स नॉट xenophobia जी, दैट्स नॉट xenophobia, दैट वाज समथिंग डिफरेंट. उमर, अच्छा मैं थोड़ा सा पॉइंट अगर इसको ले लूं, मॉडर्न दौर से रेलेवेंस की बात करूं. अगर पेपर में आ जाएगा मॉडर्न दौर में रेलेवेंस इज फाशिज्म प्रिवेलेंट इन मॉडर्न टाइम्स, तो आप डेफिनेटली लिखेंगे इन इंडिया मोदीज नेशनलिज्म इज द क्लासिकल फाशिज्म. और ये हमारी स्टेट की पॉलिसी भी है. इंडिया इज अ फाशिस्ट स्टेट. Indian government is a fascist government, particularly Mr. Modi's government is a fascist government, because they are so blind in the nationalism that they are willing to ruin. देखिए, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उस नेशनलिज्म इतना अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी that they started kind of attacking the Chinese apps को बंद कर दिया, बाइकआउट चाइना को स्टार्ट कर दिया. सेम फॉर पाकिस्तान टू. they are headed towards पाकिस्तान, जो अगेन ओबामा ने भी कहा. Yes, Modi's fascist ideology, true, हिंदुत्व वाली ideology. Oh,
यहां पे लिखा है जी किसी ने, इस्लामाबाद हैज अ साइन बोर्ड दैट रीड्स एडल्फ मोदी। सीरियसली? दैट्स गुड। यस शहबाज, दैट्स ट्रू, ट्रू। Hamza, we have apples, not apps. That's wrong. अच्छा, now the question is, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। मोदी को कहेंगे फाशिस्ट आइडियोलॉजी, और सिर्फ इस सेंस में नहीं कि उसकी अल्ट्रा नेशनलिज्म है, बल्कि इस बुनियाद पे भी दैट मोदीज पार्टी हैज बिकम विजिलेंट। दे आर प्रमोटिंग विजिलेंटिज्म इन इटली, जिसको हम कहते हैं मीट कौन सा कहते हैं, काउ विजिलेंटी, सॉरी काउ विजिलेंटिज्म कहते हैं सॉर्ट ऑफ। दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फाशिज्म एज वेल इंडिया के अंदर। तो आप उसको इटली में आप शुरू करेंगे, इंडिया में, यस इंडिया में, मैंने इटली अगर कहा तो सॉरी फॉर दैट, वैसे सोनिया गांधी इटली से हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया की बात हो रही है। सो इंडिया के अंदर फाशिज्म जो है वो काउ विजिलेंटिज्म जो है वो लाजमी आप उसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन इज विजिलेंटिज्म, यस कुरतलन, वहां पे उनके वो फिरते हैं लोग, किसी मुसलमान के हाथ में गोश्त देखते हैं मारना शुरू कर देते हैं, दैट काइंड, और वो उसको स्टेट की बैकिंग होती है वहां पे जाके। नाउ आखिरी पॉइंट यहाँ पे कि आप इटली का जो फाशिज्म था दैट वाज रेप्लिकेटेड इन जर्मनी। जर्मनी का जो नाजीज्म है दैट वाज अनदर फॉर्म ऑफ फाशिज्म। कहते हैं उसको नाजीज्म है, बट इट वाज अनदर फॉर्म ऑफ फाशिज्म। और लेकिन मोस्टली जो है करंट की बात जब आप करेंगे तो आप इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको फाशिस्ट गवर्नमेंट कहेंगे, ट्रम्प को नहीं कहेंगे सॉर्ट ऑफ। यस दैट्स ट्रू। क्वेश्चन जनरली जो इस पे आता है जी वो फाशिज्म की थ्योरी की ओरिजिन के ऊपर आता है और फाशिज्म की थ्योरी के प्रिंसिपल्स के ऊपर सवाल आता है। मॉडर्न दौर से रेलेवेंस का लफ्ज आता नहीं है, बट ना भी आए तो आप इंडिया को बीच में जरूर डाल दें प्लीज। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, हमारा का एक सवाल था फाशिज्म और उसका जो प्लेटोनिज्म है, हमारा उसको जरा कीजिएगा प्लीज क्वेश्चन को दोबारा। मैं आमने जर्मनी वाले पॉइंट पे आता हूँ, जर्मनी पॉइंट पे आता हूँ जी। फाशिज्म वर्सेस प्लेटोनिज्म। अच्छा, वर्सेस का लफ्ज तो हम इसको नहीं यूज करेंगे। देखिए प्लेटो की आइडियोलॉजी भी तो फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, इजंट इट? क्वेश्चन है जी, डिड फाशिज्म एंड विद मुसोलिनी? यस इट एंडेड। 1944 में फाशिज्म वाज एबॉलिश्ड इन इटली। दैट्स ट्रू शहबाज, ट्रू। हिटलर तो हुआ था। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है जो दैट्स ट्रू उमर, एग्रीड, एंड बोथ आर डूइंग इट उमर एट इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। 1944 में मुसोलिनी डाइड, ही वाज किल्ड, और उसके बाद से फाशिज्म खत्म हुआ इटली के अंदर। अच्छा, मेरा आपसे सवाल प्लेटो पे प्लीज। प्लेटो की आइडियोलॉजी, इज प्लेटो नॉट प्रमोटिंग नेशनलिज्म? Yes, he does. And for the sake of loyalty to the city state, exactly. And for the sake of the loyalty, does he permit people to choose a profession of their choice? Any liberties, any freedoms? Absolutely not. So that's why we compare them. तो जो प्लेटो का प्लेटोनिक थ्योरी है, that is more like a fascist theory. वो इसलिए कंपैरिजन क्यों सेंस में आते हैं, उसकी थ्योरी के अंदर अथॉरिटेरियनिज्म है, नेशनलिज्म है, लिबर्टीज फ्रीडम्स नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तक शादी तक नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है जी, शादी तक नहीं है, दैट मेक सेंस। शादी तक भी अलाउड नहीं करता, दैट्स ट्रू। पाकिस्तानी कौम को शादी की फिक्र ज्यादा हो जाती है, क्या करें। यस, फिलॉसफर किंग इज द सेकंड यूज, ट्रू। ओके, any other question on this one जी? अच्छा, did capitalism play any role to promote fascism to counter communism? जुल्फिकार ने पूछा जी। बेसिकली मैंने आपको कहा था कि ये मार्क्सिस्ट कहते हैं, आप पेपर में ऐसा नहीं लिखेंगे that capitalist promoted fascism to counter communism। ये एक आइडिया है जो मार्क्सिस्ट कहते हैं, बट आप ये पेपर में नहीं लिखेंगे। आपका ओपिनियन हो सकता है बट आप लिखेंगे नहीं। शहबाज कलंदर मेमन, हाँ ठीक कह रहे हैं, आई नो हिम।
मार्क्सिस्ट बहुत डिवाइडेड है, मॉडर्न तो मैं बहुत डिवाइडेड हूँ। मैकियावेली वाला पॉइंट बताना था मैंने, मैकियावेली वाला क्या पॉइंट था मेरा, मुझे भूल गया। मैं अपने अल्फाज भूल जाता हूँ, मैं अगर कुछ कहा था मैकियावेली से। ओह अच्छा, शहबाज पढ़ा है उन्होंने कुलज़म अहमद से? मुझे मेरा सवाल याद नहीं है कि क्या था सवाल मैकियावेली से रिलेटेड, सॉरी। अच्छा हरीम, आपको भी पढ़ाया उन्होंने, 2 कोर्सेज। हाँ, हिटलर पे भी बात कर लेते हैं। कुलज़म अहमद मेरे साथ, मैंने उनको एक इनडायरेक्ट रेफरेंस से सुना था, बट सुना था उनके बारे में, मैं मिला नहीं हूँ, बट आई एडेड हिम ऑन द फेसबुक वगैरह पे ऐड है तो, लेकिन ऐसा मेरी चैट कभी नहीं हुई। आई डू रीड हिज ब्लॉग्स, उसकी पोस्ट वगैरह देखता था मैं। ओके, एक मैं कर दूँ इसका सिंपल जी वो, हाँ मुझे इसका ही पता है शहबाज, ए और एफ वाली बात कभी हिटलर के बारे में। अच्छा मैं शॉर्टली हिटलर के बारे में बता दूं जी। अच्छा, हिटलर का राइज कैसे हुआ था ये भी लिखेंगे, बिकॉज फाशिज्म में जब आएगा तो सिर्फ इटली नहीं लिखेंगे, हिटलर का भी थोड़ा जिक्र करेंगे। अच्छा, हिटलर का जो राइज है या राइज ऑफ फाशिज्म इन जर्मनी वर ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। मैं वेरी शॉर्टली जर्मनी की बात भी कर लूं। जर्मनी के अंदर, इन जर्मनी व्हाट हैपेंड वाज, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, ये प्लीज गौर से सुनिएगा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन Germany was humiliated in the Treaty of Versailles. In Treaty of Versailles, please correct me, it was signed in 1918, I guess, या 19 है, but 1918 है मेरे ख्याल में, 19 है अमीर हमजा, ओके सॉरी, उसके 1919 में जब Treaty of Versailles साइन हुई थी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी जी, 19, when Treaty of Versailles was signed, in that treaty Germany was humiliated. इस ट्रीटी को जर्मनी में कहा जाता है ट्रीटी ऑफ शेम। इन दिस ट्रीटी जर्मनी was penalized in multiple ways. फॉर एग्जाम्पल, ब्रॉड सेंस में बात करूंगा, जर्मन टेरिटरीज वर टेकन अवे, एलाइज नहीं की थी ब्रिटेन फ्रांस और रशिया ने, रशिया नहीं सॉरी, ब्रिटेन फ्रांस और यूएस। द जर्मन टेरिटरीज वर टेकन अवे, द जर्मन्स वर आस्क्ड टू कंपेंसेट फाइनेंशियली फॉर द वॉर डिस्ट्रक्शन। जर्मनी was forced to limit its military and weapons. So फाइनेंशियल कंपनसेशन करनी थी जर्मनी ने, मिलिट्री को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया गया, उसके वेपन्स को भी और मिलिट्री की नंबर्स को भी, एंड its territories were lost. Monarchy was also abolished and Germany was turned into a republic. जार डायनेस्टी से, सॉरी जार कह रहा हूं, काइजर डायनेस्टी से इट वाज टर्न इनटू अ वीमर रिपब्लिक। व्हेन इट वाज टर्न इनटू अ वीमर रिपब्लिक, तो यानी जर्मनी को हर लिहाज से स्क्वीज किया गया इन ट्रीटी। और ट्रीटी पता है बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड से होती है ट्रीटी, अल्फाज हैं उसके, द ट्रीटी सेज वीमर, WEIMER, वीमर रिपब्लिक मुस्तफा। अच्छा, ट्रीटी शुरू होती है विच सेज, ट्रीटी के लफ्ज हैं, दैट allies affirm and Germany accepts the responsibility for the World War I. Allies affirm and Germany accepts or confesses the responsibility for World War I. यानी सारी वर्ल्ड वॉर वन की जिम्मेदारी, उसका गिल्ट डाल दिया गया जर्मनी के ऊपर, और इस प्रोविजन को कहते हैं वॉर गिल्ट क्लॉज, that the entire responsibility of the World War I lies with Germany. War guilt, that's called humiliation. So that humiliation, जिस तरह इटली में सेंस ऑफ बेट्रेयल था,
यहां की भी ह्यूमिलिएशन, दैट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई Germany started witnessing the rise of nationalist ideology. That betrayal, that humiliation actually created the environment in which Hitler developed nationalism in Germany. That was one reason. Amir Hamza, I don't agree with that, by the way. आप ठीक कह रहे हैं, बट सर्बियन असैसिन की वजह से जो वाकया हुआ था, उसकी वजह से ऑस्ट्रो हंगरी का सर्बिया पे वार करना, दैट वाज आल्सो अ फैक्टर. और फिर नहीं, दैट डिडंट हैपन 1933. फर्क ये हुआ था, यस, ओनली वाज अ स्पार्क. अली शायद एग्रीड, ठीक है. दैट वाज नॉट द टिपिंग पॉइंट. द टिपिंग पॉइंट वाज जब ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया पे हमला किया, रशिया ने ऑस्ट्रो हंगरी, देखिए, जब ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया पे हमला किया और जब रशिया ने ऑस्ट्रो हंगरी पे हमला किया, द वार वाज ओनली बीइंग फॉट विद इन सर्बिया. वो लिमिटेड टेरिटरी में लड़ी जा रही थी. इट वाज जर्मनी हु एक्सपेंडेड द थिएटर ऑफ द वॉर. ही ब्रॉट इट फ्रॉम आउटसाइड सर्बिया एंड वेंट इनटू रशिया. मेरा ख्याल है कि मैं अगर गलती, बट ये एक डिबेटेबल बात है, मैं एग्री करता हूं कि इसमें डिफरेंट डिबेट्स होती हैं इसमें. एनीवे, Germany was mostly responsible, but was not solely responsible. But हम ये कहें कि Germany was not responsible at all. No, it was majorly responsible for that. Anyway, but we can agree to disagree. आगे चलते हैं. फर्क, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, ये तो हुई थी 1919 के अंदर. जर्मनी को कहा गया और उसके बाद ग्रेजुअली प्रोविजन वाज कॉल्ड वार गिल्ट क्लॉज. दैट प्रोविजन जिसमें जर्मनी को जिम्मेदारी डाली गई, वार गिल्ट क्लॉज कहते हैं. सो अमीर हमजा, वर्ल्ड वॉर 1 की जो टाइम फ्रेम है 1918 में वॉर एंड हो गई थी. 1919 में ट्रीटी हुई थी. वर्ल्ड वॉर 1 फ्रॉम 1914 टू 1918 और फिर 1919 में जाके ये ट्रीटी हुई, वर्साइल्स ट्रीटी. ओके, सो एक तो दूसरी बड़ी, फिर लेकिन बाद में उसी की वजह से हिटलर की राइज हुई. हिटलर का राइज हुआ और हिटलर grew in power and ultimately through elections he came to power in 1933. 1933 में फिर वो इलेक्शन के जरिए से पावर में आया and then he brought that Nazism in Germany. ये एक वजह है. दूसरी वजह हिटलर के राइज की, दूसरी बड़ी वजह जो हिटलर के राइज की है, that was the spread of communism. The communism, वही वाली बात, जिस तरह इटली को खतरा था, तो जो जर्मन नेशनलिस्ट थे, those who were patriotic Germans like Hitler, they also feared that the communism will crush the German nationalism. It would kind of move towards Germany and would capture Germany, and therefore the preservation of German identity requires a fascist kind of ideology, a strong nationalist ideology, जिसको Nazism का नाम दिया गया, and that was meant to prevent Germany, protect Germany from the growing threat of communism. इसलिए अगर आप देखिएगा कि 1936 में जाके, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, 1935 या 36 में जाके जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों मिलकर कम्युनिज्म के खिलाफ एक अलायंस बनाएंगे. एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट भी कहते हैं. एंटी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पैक्ट, आई गेस 1935 है या 36 है, बट दे फॉर्म्ड दैट एंटी कम्युनिस्ट अलायंसेस. Why they considered fascism better than communism? जी सवाल आया. Because fascism was a nationalism and communism was a threat to their nationalism. If you are loyal to the state, you will reject any ideology that targets your state. So it's simply the idea of your national identity. तीसरी बड़ी वजह बनी जर्मनी, इटली एंड जापान. जापान, जर्मनी और इटली के दरमियान में ये एग्रीमेंट हुआ था, एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट. सो राइज ऑफ Nazism or Nazism is itself fascist ideology. That was also because of the rise of communist threat. आखिरी तीसरी वजह जो है, that is the 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुई, उसके बाद एक पूरी ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, और उस डिप्रेशन के अंदर यूरोपियंस सफर्ड अ लॉट. तीन स्टेट में फिर भी कहूं जी, जर्मनी, जापान एंड इटली. सो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s जो 1929 में वॉल स्ट्रीट के क्रैश से शुरू हुआ,
that also crippled the Europeans, including Germany. And when German economy was eroding, Germans were dying because of poverty and unemployment. And at that point, they were also asked to pay the fine of the World War I to allies. जब जर्मन्स भूख से मर रहे थे तो उनकी स्टेट को कहा जाता that you should pay the money to the allies. So this kind of cruel behavior towards Germans led to the rise of nationalist ideologies like that of Nazism in Germany. और फिर 1933 में इलेक्शन के नतीजे में हिटलर पावर में आए एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग द अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी एंड ऑल दैट. प्रिंसिपल्स वो अल्टीमेटली सेम ही होंगे सर. दिस इज सिंपली जी ऑल ऑफ द फाशिज्म. थोड़ा सोशलिज्म भी क्लियर कर दें. मेरे ख्याल में सोशलिज्म मैंने मार्क्सिज्म में लिखवाया हुआ है, जरा एक दफा दोबारा देखिएगा, उसमें लिखा होगा आपको सोशलिस्ट स्टेट क्या है और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट स्टेट क्या है. Socialism is the first stage in which proletariats will unite and then ultimately they will end the state system जो communism बन जाएगा. Why he hated Jews, especially Zahid ने पूछा, बुनियादी वजह because he considered Jews as a threat to the stability of the state. और वो दूसरी वजह थी he considered Jews mainly responsible for the defeat of Germany in World War I. अच्छा ज़ुल्फ़िकार, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको मैं शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट इसको मैं किसी लेक्चर में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह. यस आई अंडरस्टैंड जी. आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अच्छा मेरा आई थॉट हमें करेंगे, हमने दो टॉपिक छोटे छोटे करने हैं जी, एक लोकल गवर्नमेंट और एक लिबर्टी. ये टॉपिक करने के बाद देन विल मूव टुवर्ड्स पेपर 2. नो हमारा हम दो टॉपिक करेंगे, एक सिविल लोकल गवर्नमेंट करेंगे और एक करेंगे लिबर्टी. प्रेशर ग्रुप्स आप लोग खुद करेंगे प्लीज. सॉवरेंटी में कराऊंगा मानूल, बिकॉज उस पर सवाल आता है. सॉवरेंटी में करूंगा जी. इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन फाशिज्म यू विल हैव टू राइट ऑन बोथ ऑफ देम. प्रेशर ग्रुप्स आप लोग खुद कीजिएगा. जी जी प्लीज आप लोग जाइए जिनकी क्लास है, प्लीज बाय 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 बाय. जो टॉपिक आपको मैं बताऊंगा जी सर आपने वो करने टॉपिक्स इंशाल्लाह. आई गेस वी विल हैव आज के बाद से हमारे कोई मैक्सिमम जो है वो कोई 8 लेक्चर होंगे शायद. और इसके बाद पेपर 2 आसान है, उसको मैं बताऊंगा आपने कैसे करना है. एक लेक्चर हमने और रखने पेपर 1 पे, देन वी मूव टुवर्ड्स पेपर 2. ट्विन चैलेंजेस फ्रॉम करप्ट गवर्नमेंट इन इटली. ट्विन चैलेंजेस से मतलब ये था द इकोनॉमी वाज इन शटर्स बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर I and the government was incompetent and corrupt to recover the economy. ये दो मेरे जी मैं बताऊंगा, रिविजन बताऊंगा इसके अंदर. नहीं जवेरिए वो टॉपिक करेंगे रिमेनिंग जो मैं आपको बताऊंगा, बाकी नहीं करने आपको. चलो विजिलेंटिज्म का मतलब ये होता है जब ग्रुप्स जो हैं, कुछ सोसाइटी के कुछ लोग जिस चीज को ठीक समझते हो उसको सोसाइटी पे इंप्लीमेंट कराना शुरू कर दें, जबरदस्ती लोगों को एक खास तरीके पे इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करें, उसको हम कहते हैं विजिलेंटिज्म. ओके जी बाय बाय, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में.